welcome back to our channel. I hope you all are doing well. Let us begin with the chapter number 2 of grammar, and the name of the chapter is sentences, simple, compound and complex, right? तो अब जो sentences हैं we know कि वो three types के होते हैं, that is simple, compound and complex, right? So let us see. We have the very first topic. So it is sentence. So let us read the sentence. क्या है? So a sentence is the basic unit of language. This is a complete noun. कि सेंटेंस जो है वो लैंग्वेज का एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स इन सभी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं. A complete sentence has at least a subject and a main verb to state a complete thought. एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस के पास कम से कम एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब होना चाहिए ताकि वो हमारे थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर सके. Depending upon the thought they convey, there are 4 types of sentences that are used in writing: declarative, exclamatory, imperative and interrogative. अब अगर हम अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दें तो टोटल 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं लिखते वक्त. दैट इज डिक्लेरेटिव, exclamatory, imperative and interrogative, right? Each type is used in a specific situation and each has its own punctuation work. तो हर टाइप की अपनी एक स्पेसिफिक सिचुएशन है और each has its own punctuation mark और हर किसी के पास अपना एक punctuation mark होता है, right? So first of all they say that for the very first thing that we have here is declarative sentence, right? So first of all we have declarative statements, right? So declarative sentences make a statement. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो एक्चुअली एक स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट? They tell us something, they give us information and they normally end with a full stop. Declarative sentences can be positive or negative, right? तो ये हमें कुछ ना कुछ बताते हैं, ये हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट? और ये नॉर्मली एंड किए जाते हैं एक फुल स्टॉप पर, राइट? और ये सेंटेंसेस जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म्स में मिलते हैं. So let's have a look at these examples. So the positive examples are I like coffee and the negative becomes I do not like coffee. Next, we watched TV last night. We did not watch TV last night, right? So the declarative sentences are the most common types of sentence. ये declarative sentences हैं, ये सबसे ज़्यादा common types of sentences, right? The next thing that we have is the interrogative sentence, that is the question. Let's see. Interrogative sentences ask a question, they ask us something. कि इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो है वो हमसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं किसी भी चीज के बारे में. दे वांट इंफॉर्मेशन एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो हमसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं और हमेशा एक क्वेश्चन मार्क पर ही एंड किए जाते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस can be positive or negative. ये जो interrogative sentences हैं ये positive और negative दोनों ही forms में मिल जाते हैं. Look at these examples. जैसे examples देखते हैं. First the positive, do you like coffee? And the negative becomes don't you like coffee? Again, why did you go? And why didn't you go? Right? Next, we have the imperative sentences. It is command. देखते हैं imperative sentences कौन से हैं. So the imperative sentences gives a command.
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में है वो एक कमांड देते हैं. They tell us to do something and they end with a full stop or exclamation mark, right? ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये हमें कुछ ना कुछ करने के लिए ऑर्डर देते हैं, राइट? और ये यूजुअली किसी भी फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म किए जा सकते हैं, राइट? Note that there is usually no subject because the subject is understood, it is you. Okay? इन सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल होता है, दैट इज यू. Imperative sentences can be positive or negative. ये जो imperative sentences हैं ये दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों फॉर्म में हमें मिल जाते हैं. So let us have a look at the examples, which is positive. So they say stop or give her copy. Negative, do not stop or don't give her copy. Right? Moving ahead, the next topic that we have is the exclamatory sentence or the explanation. अभी exclamatory sentence और exclamations क्या है? So exclamatory sentences express strong emotion, surprise, an exclamation, and they always end with an exclamation mark or quote, right? ये जो exclamatory sentences हैं ये कोई भी strong emotion या surprise को express कर सकते हैं, and that is an exclamation, और हमेशा end किए जाते हैं एक exclamation mark पर. Look at these examples. तो अब इन examples को देखते हैं. What a liar he is. What an exciting movie was. How he lied. How exciting the movie was. Right? Moving ahead, the next that we have is, depending upon the structure of the sentence, sentences are mainly three kinds: complex and compound. तो अगर हम स्ट्रक्चर पर डिपेंड करें सेंटेंस के तो वो यूजुअली थ्री काइंड्स के होते हैं, दैट इज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, राइट? तो लेट्स स्टडी अबाउट दीज वन बाय वन. इन सभी के बारे में एक एक पढ़ते हैं, राइट? So the very first thing that we have is a simple sentence. So let's read about it. A simple sentence is one which has one subject and one verb. Or a simple sentence is one which has only one finite verb and it has only one clause. एक simple sentence वो कहलाते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि सिंपल सेंटेंस उन्हें कहा जाता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो जिसके पास सिर्फ एक ही क्लॉज हो, राइट? एग्जांपल्स: हिज करेज won him honor. Next, an honest man is loved by all. The staff performed well. Mary hired a taxi to airport. Right? Moving ahead, we have the compound sentences. Let's see. A compound sentence is made up of two or more principal clauses. कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है उसमें दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉजेस हो सकते हैं. तो स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स. जल्दी से यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उन्हें पढ़ते हैं. राम वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वाज लेट. Riya and Sia arrived at the bus station before noon and they left on the bus before I arrived. Right? So, sentence 1 has two parts which are joined by a coordinating conjunction, that is for, and, nor, but, etc. Right? कि one sentence में हमने देखा कि इस सेंटेंस में दो पार्ट्स है जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करके ज्वाइन किए गए हैं, राइट? Hence the examples. So, sorry, the two sentences are Ram waited for the train
and the train was late, right? So each part of a subject and a predicate of its own. हर पार्ट के पास अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है, right? Moving ahead, we have each is a clause which makes good sense by self. तो यहाँ पर हर उसके सेंटेंस के पार्ट के पास एक क्लॉज है जो कि अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बना सकता है. Therefore, each clause is dependent of the other and is called a principal clause. कि हर एक क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट किया जाता है दूसरे क्लॉज पे और कहलाता है एक प्रिंसिपल क्लॉज, राइट? सेंटेंस 2 consists of two clauses of the same order. सेंटेंस 2 जो है वो दो क्लॉजेस को कंसिस्ट करता है जो कि सेम ऑर्डर पे होते हैं. कि Priya and Sia arrived at the bus station before noon. और दूसरा पार्ट, they left on the bus before I arrived, right? So, a compound sentence has two or more clauses that can stand themselves. So, every clause has equal importance, right? एक कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं जो कि अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बन सकते हैं. एवरी क्लॉज हैज इक्वल इम्पोर्टेंस. हर क्लॉज की उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है जितनी की दूसरी, राइट? मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. So let's read about the complex sentences now. So it says, complex sentence is one which has one principal clause that is independent clause and one or more than one subordinate clauses that is dependent clause, right? So now they are saying कि complex sentence में एक principal clause होता है जिसे हम independent clause भी कहते हैं और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, राइट? प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस सेंस बाय इटसेल्फ. प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो कि अपने आप से सेंस बनाते हैं, राइट? सबॉर्डिनेट क्लॉजेस डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लॉजेस एंड डू नॉट मेक सेंस ऑन देयर. सबॉर्डिनेट क्लॉजेस जो है वो प्रिंसिपल क्लॉजेस पे डिपेंड करते हैं और वो कोई भी सेंस अपने आप से नहीं बना, राइट? नेक्स्ट वी हैव द सबॉर्डिनेट क्लॉजेस आर आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉजेस एंड नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्बियल क्लॉजेस. तो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस जो है वो ऐसे क्लॉजेस पे डिपेंड, they are also known as the dependent clauses जिनमें noun, adjective और adverbial clauses भी include होते हैं, right? Subordinate conjunctions are used to link principal clauses and subordinate clauses from complex sentence. इस subordinate conjunctions का use किया जाता है ताकि हम principal clauses को link कर सकें subordinate clauses और complex sentences के साथ, right? Now we have the next thing which is the noun clause in a complex sentence. अब एक complex sentence में noun clause क्या है? तो a noun clause does the work of a noun and it can be formed. तो एक noun clause जो है वो काम करता है एक noun का और ये इस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है. The subject of a verb, the object of a transitive verb, the object of a preposition, the complement of a verb, clause in apposition to a noun or pronoun, right? So here we have examples. Let us see them. So that he will return within an hour is not certain. So here noun clause is acting as a subject. After that, why he refused the job is a story. Ask if he is at home. Noun clause
as object. I asked the girl, how old was she? Pay attention to what your principal says. That is noun clause as object of preposition. My success depends upon who is placed over me. This is where I live. Noun clause as complement of the verb. Like is what we make of it, right? So these were the examples. Moving ahead to the adjective clause in the complex sentence. तो अब एक adjective clause क्या है? Complex sentence. An adjective clause, the work of an adjective. एक adjective clause actually एक adjective का काम करता है. It qualifies a noun or a pronoun in the principal clause. ये qualify करता है एक noun को और pronoun को एक principal clause में, right? Examples: this is the house that Tony built. She is the lady who we all regard. I met Tabby, who gave me this letter. He released the bird, which at once flew back to its nest. There was not a man, but shed tears at his death. There was not a soldier, but fought bravely. It was such a sight as I had never seen before. We saw the same places as you saw last month, right? Moving ahead. Now here we have the adverb clause in the complex sentence. So अब हमारे पास है adverb clause को कि complex sentence में कैसे यूज किया जाता है ये बताया जाएगा. So here we have an adverb clause does the work of an adverb in a complex sentence. कि एक adverb clause काम करता है एक adverb का एक complex sentence. Following are the classifications of the verb clauses. ये जितनी भी यहाँ पर classifications हमें दी हुई हैं ये verb clauses की. तो time, place, reason, purpose, consequence, concession, condition, comparison, right? Now, here we have examples of all the categories. Let us read them. So, first of all, we have the two sentences of time. So, I have not heard from her since she left this place. Don't talk loud while she is singing. You may go whenever you like. Where there is a will, there is a way. She will succeed because she works hard. Since you desire it, I will buy it for you. He ran fast lest he should miss the last bus. He eats so that he may live. He ran so fast that he was out of breath. He was so weak that she could hardly stand. Even if he is old, he is very active. Although I told her to do it, yet she repeated it. If the weather is good this afternoon, we shall go out to play. I must leave immediately whether he comes or not. As you saw, so shall you reap. Nobody lover you more than you. Right? So that was all about the chapter. I hope you all are clear with it and you all got the thing really well. Thank you so much and have a great day ahead.